For the next exercise, children, now there are again certain results that you'll have to memorize. Like earlier we have done, certain results we had learned and then we were applying them. Okay, so now there is another form. That time the expressions were in denominator. Here they are in numerator. Okay, तो अभी आपको इससे पहले उसने integration by parts सिखाया है. तो by use of by parts, these results are derived. If you want to see the derivation, you may. Okay, but more importantly, hardly derivation will be asked, and you just require to learn the results and you should know how to apply them. Okay, so like if you have integral of the form under root of x square plus a square dx form, then that integral comes out to be half of x under root of x square plus a square and plus a square by 2 log of x plus under root of x square plus a square modulus plus c. Okay, somewhat similar kind of expressions you also had there. Okay, there's a slight difference out here that you have to note and learn. And then other form can be, it could be a square minus x square form. The first part remains the same. Of course, this expression and this expression is exactly the same. And इसमें आता है a square by 2 and sin inverse. यहाँ log form है, minus sign अगर हो जाएगा तो ये sin inverse x upon a form, and that's the only difference. So just these two more results you have to learn, and then you have to see its application in exercise 7.7. So exactly same kind of working, you have to match up with that standard form and then apply the result. All that you need to do, which you have practiced earlier. So still I've taken 1-2 examples and rest you will try, because it's all about mastering your calculation, which is better off done when you do the questions on your own. So the first one is simple enough. It's under root of, you have to match up with this. This is matching up with your form under root of a square. So your a is 2 out here. 4 is 2 square minus x square. तो साइन इनवर्स वाला फॉर्म था. तो इसका रिजल्ट क्या था? स्ट्रेट अवे x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमने सिंप्लीफाइड करके पूरा लिख लिया एक्सप्रेशन. प्लस इट वॉज a स्क्वायर बाई 2. So your a square is 4 here. 4 upon 2. So that would cancel out 2 times sin inverse of x upon a plus c. Direct result. Okay, same way here also. इसको आप लिख लो 1 minus 2x whole square. बट जब आप रिजल्ट लगाओगे तो फर्दर उस पूरे रिजल्ट को अपॉन 2 करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग अ स्केलर टाइम्स x. रिमेंबर? ओके, एंड और द अदर वे राउंड कैन बी, आप इसको 1 बाय, ये 4 को आप कॉमन भी ले सकते हो. दैट इज अनदर वे. यू कैन टेक योर कांस्टेंट आउट हियर एज 1 by 4 और 1 by 2 होल स्क्वायर. सो एज यू फाइंड इट कन्वीनियंट. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसको आपको होल स्क्वायर बना के यू हैव टू मैच अप विद द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, आइदर एक्स स्क्वायर प्लस a square or a square x square plus a square, or maybe a square minus x square. Okay, so like this example I've done here, that was the expression. इसको whole square बनाने के लिए we know this matches up with a square and this one has to correspond to 2 into a. तो b हमारा 2 बनता है, तो b का square हम plus okay, this 6 I have split out here, plus comes to the same. Okay, I have split this 6 as 4 plus 2, and that 4 I have written as a square. आप चाहते तो यहाँ पे plus 4 because of b square, 2 square and minus 2 square करोगे तो comes to the same. Minus 2 square will become 4, and 4 minus 4 plus 6 will give you 2. So anyhow you can manage. Okay, so what are we observing is that this expression in net is becoming x plus 2's whole square, and this will write, because a square form लिखनी है तो root 2 whole square. Okay, that is not visible there. This way. So that will become root 2 whole square. But once it is in form variable square plus a constant square, now we can apply our result, and the result was x upon 2. So in place of x we have x plus 2 upon 2 under root of, ये एक्सप्रेशन आता है. अब ये एक्सप्रेशन हमारा यहीं से आया था तो मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दिया. आप चाहो तो पहले ऐसा लिख लो, नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करके लिख लो, एंड देन इट्स a स्क्वायर बाई 2. तो a स्क्वायर हमारा 2 ही है, तो 2 by 2 कैंसिल होके 1 टाइम रह जाएगा. लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सिंप्लीफाई. ओके, वी नो दिस वॉज फ्रॉम हियर, तो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हो. दैट्स इट. ओके, so you just need to learn the results out here, and you should know how to make this whole squares, which of course all of you know. ये तो आपने 10th में ही मास्टर कर लिया था, right? Fine. Then fourth one is also similar, children. Now you'll try all these on your own. इसमें negative वाला भी हमने deal किया हुआ है already.
नेगेटिव वाले में हमें एक नेगेटिव कॉमन लेना पड़ता है बिकॉज स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल हियर of the negative sign also. Under root of 1 minus 4x minus x square. So under root of 1 I have taken minus sign common from both these. Okay, तो इसको बना दिया. x square plus 4 है, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है तो plus 4 भी आना चाहिए. a square 2ab, so we know b square is 4 out here. ओके, सो ये +4 होगा. उसके कंपनसेशन के लिए -4 करोगे बट बाहर से नेगेटिव था तो बेसिकली +4 हो जाएगा. या जैसे भी समझो, इफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड यहाँ से -4 +4 बैलेंस होके ये एक्सप्रेशन आ जाता है. आप जैसे समझो. ओके, सो वी रोट इट लाइक दिस बिकॉज नाउ दिस होल बिकम्स x plus 2's whole square and your constants we'll put together. So 4 plus 1 and then we write it as a square. So we'll write it as root 5 square because 4 plus 1 is 5. फाइन. अब इसमें रिजल्ट आ जाएगा आपका सीधे सीधे. दिस इज योर a and this is your x. So x upon 2 under root of a square minus x square. Simplify. Okay, I know this has to come as this. So this will be written like this and then this is a square by 2 sin inverse of x upon a plus c. Okay, तो बस ये थोड़ी सी मेहनत है, बाकी रिजल्ट आपने याद किया तो दीज क्वेश्चंस आर इजी टू डील विद. सो प्लीज चिल्ड्रन ट्राई दिस, प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज, हाउ टू मेक ऑल दोज होल स्क्वायर्स एंड ऑल. ओके, एंड 10th 11th मल्टीपल चॉइस हैं, शॉर्ट पढ़ेंगे, ओरल आप इनको ऐसे ही देख सकते हो. दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म आ रही है. तो क्या होता है x by 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2. तो ए हमारा 1 ही है एंड लॉग फॉर्म आता है. तो लॉग ऑफ एक्स प्लस, तो एक्स वॉज एक्स ओनली. सो क्लियरली हमें दिख रहा है जो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट है ये इज द सोल्यूशन फॉर दिस डायरेक्ट रिजल्ट. ओके, ये अजीब अजीब इतने टाइप के कैलकुलेशंस नहीं होते हैं. ओके, नाउ फॉर द 11th वन. 11th वन वॉज क्वाड्रेटिक. तो इसको यहीं पे आई हैव शोन यू कि इसका आप बनाओगे तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी स्प्लिट एज 2 इंटू एक्स इंटू 4. सो 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 एंड 7 वॉज द कॉन्स्टेंट गिवन देयर. तो ये आपका बन जा रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 plus 7 gives you 9. I've written that 9 as 3 square to match up with x square minus a square form. Okay, so for that the result would be x by, sorry beta, this is minus, this is not plus here, there was minus sign there. So x was x minus 4 upon 2 आएगा, वो तो सभी में आ रहा है. Then under root of ये पूरा सिंप्लीफाई होकर ये एक्सप्रेशन देगा. तो फर्स्ट पार्ट तो सभी का सेम है, राइट. सेकेंड पार्ट हमें मैचअप करना है. सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स आता है, बाकी सब प्लस माइनस सारे में लॉग फॉर्म आता है. तो इट वुड बी ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर हमारा 9/2 है. ये दो वैसे ही रूल आउट हो गए, इसमें 9/2 है, बाकी भी आप चेक कर लो. आई थिंक बाकी सब सेम ही थे, सिंपल है. तो इनको तो आप इजीली गेस कर सकते हो लाइक दिस. ओके, इफ दे कम इन मल्टीपल चॉइस.